Assalamu alaikum students. How are you all? अच्छा, आप ये देखें, दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द नेसेसिटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. एज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेसेसिटी ऑफ सनलाइट, तो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सनलाइट जो है इट विल बी एब्सेंट एंड इन कंट्रोल ग्रुप सनलाइट विल बी प्रेजेंट, राइट. अच्छा, इस केस में हमने क्या करना है, अगेन वी विल टेक अ प्लांट, उसको हम डिस्टार्च करेंगे बाय प्लेसिंग इट इनटू द डार्क, और डिस्टार्च करने के बाद अगेन वी विल प्लेस इट इनटू द सनलाइट सो दैट इट शुड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अगर ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है. अच्छा, हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, तो हम डिस्टार्च करने के बाद प्लांट को लेंगे और प्लांट को हम प्लेस करेंगे इनटू अ सेटअप. अच्छा, यहाँ पर आप डायरेक्ट देखिए, आप प्लांट लेंगे डिस्चार्ज करने के बाद, और प्लांट के एक लीफ को, यहाँ पर हमने लीफ को प्लक नहीं करना, लीफ विल बी विद द स्टेम, और हम पॉटेड प्लांट भी ले सकते हैं इस केस में. व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, हम इस पे कार्बन ब्लैक पेपर की स्ट्रिप्स कट करेंगे ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल साइज. उन स्ट्रिप्स को हम ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ एंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ प्लेस करेंगे. What will be the purpose of these black strips? These black strips are impervious to light, or they will cut down the supply of light to the plant. अब आप देखें कि लाइट और सनलाइट हमने ओमिट कर दिया बाय यूजिंग दिस ब्लैक पेपर, राइट. तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी हो गया. ओके, अच्छा, पर्पस हमने बता दिया है. अब हम क्या करेंगे, हम सेम वे में इस प्लांट का, इसी के ऊपर ही द एरिया विच इज ग्रीन एंड विच इज प्रोवाइडेड विद द सनलाइट, हम इस एरिया को भी एज अ कंट्रोल यूज कर सकते हैं. बट हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हुए हम एक कंट्रोल ग्रुप लाजमी लेते हैं फॉर कंपैरिजन. अच्छा, कंट्रोल ग्रुप में हमने क्या करना है, ब्लैक पेपर से आप बेशक उसको कवर ना करें, ठीक है, वो भी ठीक है. अगर आप ब्लैक की जगह यू कैन यूज द ट्रांसपेरेंट पेपर्स. ट्रांसपेरेंट विल अलाउ द सनलाइट टू पास थ्रू इट. इसका मतलब है कि हमारे कंट्रोल ग्रुप में देयर विल बी सनलाइट प्रेजेंट, हम सनलाइट को ओमिट नहीं करेंगे इनटू कंट्रोल ग्रुप. अच्छा, आफ्टर कवरिंग इट विद ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स we will fix it with the paper clips, और हम इसको प्लेस करते हैं into sunlight, right. अच्छा, 6 to 8 hours, 12 hours it will carry out photosynthesis. Okay, after 8 hours we will again pluck this leaf which was covered with the black paper strips. We will remove the strips, और हम इस लीफ के साथ क्या करेंगे, और इस लीफ का we will again perform the starch test जैसे कि we have discussed here. We will boil that leaf into water, then into ethanol, and then again into water, and then we will add iodine in the end. If it turns blue black, it means that plant has carried photosynthesis, and if it stays brown on a other plant has no starch, that's why it is brown. अच्छा, अब हम यहाँ पे रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं. जैसे ये हमारे पास ब्लैक पार्ट है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगी, देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है. अच्छा, इस पार्ट के ऊपर नो फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर जो है आयोडीन का कलर क्या होगा, yes Simab, you can text me your question and I will answer in the end. मिस, इज इट नेसेसरी कि हम स्टार्चेस में इथेनॉल यूज करें, उसके अलावा कुछ यूज कर सकते हैं? Mic and text me because mic is not loud. Yes, I've heard your question and I'm going to answer. एथेनॉल हम बेटा इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर सकते हैं, अदर देन एथेनॉल भी हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्वेंट, ठीक है, which dissolves chlorophyll. Chlorophyll is organic molecule, तो organic molecule dissolve होते हैं to organic solvents. हम एथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल भी यूज कर सकते हैं, या हम जो है कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, राइट. अच्छा, और ओके, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. आप या तो इसमें मुझे टेक्स्ट कर दें, देन आई विल आंसर इन द एंड.
ध्यान में देख लिए, इसमें दिस पार्ट विच इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, यहाँ पर आयोडीन जो है इट विल स्टे ब्राउन. वाई? बिकॉज यहाँ पर क्या, इट विल स्टे ब्राउन बिकॉज यहाँ पर सनलाइट नहीं थी, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई. हुआ तो not synthesized glucose, they have not synthesized starch from the glucose, so iodine will stay brown at this place. अच्छा, दूसरी प्लेस आप देखें, दिस ग्रीन वन के ऊपर क्या होगा, प्लांट वॉज प्रोवाइडेड विद द सनलाइट, या कंट्रोल ग्रुप भी हम यहाँ पे कह सकते हैं. और इफ इट्स प्रोवाइडेड विद द सनलाइट, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज बनेगा, एंड iodine will turn blue-black. Blue-black at this point where sunlight was provided. Okay, इसी तरह हमने दूसरा सेटअप जो है, अगेन सात टेस्ट हम करेंगे. अच्छा, सेकंड सेटअप जो है, दिस इज फॉर द फाइंड आउट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. इसमें हम बेल जार लेते हैं, दिस इज द बेल जार. अच्छा, बेल जार में वी हैव टेकन दिस पॉटेड प्लांट, और पॉटेड प्लांट को भी हमने फर्स्ट डिस्चार्ज किया. डिस्चार्ज करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका लगा के, तो हमें इसको सनलाइट में रखना है सो दैट इट शुड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. इसके साथ साथ हमने कंट्रोल ग्रुप को भी एज इट इज ही ट्रीट करना है. डिस्चार्ज करना है हमने. डिस्चार्ज करने के बाद हमने क्या करना है, स्मॉल पॉटेड प्लांट लेंगे, वी विल प्लेस इट इनटू द बेल जार, एंड बेल जार इज ऑफ ग्लास. तो इसका मतलब है कि बेल जार में से प्लांट को सनलाइट मिल रही है. इट इज गेटिंग सनलाइट थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट बेल जार. सनलाइट हमने प्रोवाइड कर दी है. As this is for the carbon dioxide, so we will omit only one factor, which is the carbon dioxide. अच्छा, इसमें जो है आप देखें कि we will place potassium hydroxide. We have discussed it in the start. Potassium hydroxide हम use करेंगे for absorbing carbon dioxide. Inside आप देखें we have placed here a petri dish, right, जिसमें हमने potassium hydroxide लिया हुआ है. अच्छा, ऊपर आप देखें at the mouth of the bell jar we have added soda lime. Soda lime is mixture of calcium hydroxide and sodium hydroxide, right? Soda lime is mixture of calcium hydroxide plus sodium hydroxide. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर डायरेक्टली बेटा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, और सोडा लाइम भी यूज कर सकते हैं. वी हैव डिस्कस्ड इट इन द बिगिनिंग. इन तीनों का पर्पस क्या है, ऑल दीज थ्री विल एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करेंगे तो इट मीन्स के हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड ओमिट हो जाएगी. While we have placed it inside and while we have placed it at the mouth of the bell jar, reason is कि जो atmospheric carbon dioxide है, it will be absorbed by the soda lime. Remaining, if some carbon dioxide is present into the bell jar, as gases are also present into the soil, there is soil into this pot, तो उसमें अगर carbon dioxide present होगी तो it will be absorbed by this potassium hydroxide. और plants are carrying out photosynthesis, right? Yeah, plants are carrying out respiration. Respiration में if carbon dioxide is being released into the jar, तो वो भी absorb हो जाएगी by this potassium hydroxide. तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को omit करना है, absorb करवाना है by this soda lime and potassium hydroxide outside the, और if it's present inside the jar, तो वो भी हम क्या करेंगे, absorb करवा लेंगे. It is covered by the polythene bag. Again, polythene bag से cover करने का भी यही purpose है कि if carbon dioxide is present into the pot, that is taken by this. और अच्छा, polythene से जो हम इसको cover करेंगे, एक तो to absorb carbon dioxide, और second जो है polythene is not as such required here because this is not being done for the transpiration. ठीक है, अगर हम polythene से cover नहीं भी करते तो then it's also कि हमारा experiment हो जाएगा. कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करेंगे, we will again
set up in the same way. और यहाँ पर in petri dish where we added potassium hydroxide we will add water, या आप इसको empty भी place कर सकते हैं, water भी add करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, and at the mouth of the jar where we added soda lime to absorb carbon dioxide, वहां पर आप इसको empty भी place कर सकते हैं, and you can also use the pebbles. ओके. अच्छा, अब हम इस सेटअप को प्लेस करेंगे इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर 6 to 12 आवर्स. इट विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में अगेन इट विल मेक ग्लूकोज व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. और अब हम क्या करेंगे, इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे दोनों का. वी विल टेक लीव फ्रॉम दिस कंट्रोल सेटअप एंड वी विल टेक लीव फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप. आप स्टार टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमने पहले डिस्कस किया था. अगेन क्विकली आई एम गोइंग टू डिस्कस इन 1 to 2 minutes. We will pluck the leaf and we will boil it leaf into the boiling water. Right, as some of the students have joined now, so I'm quickly going to revise how we are going to perform the starch test. अच्छा, we are going to pluck the leaf from this experimental setup and we are going to pluck a leaf from this control setup. और दोनों को हम as it is treat करेंगे, हम दोनों का starch test perform करेंगे. We will boil this leaf into the boiling water, and purpose of boiling it into the boiling water is to make the cell membrane permeable. डिटेल में मैं आपको रीजन बता देती हूँ. as we've studied, cell membrane is made up of lipid bilayer, और लिपिड को जब हम बॉयल करते हैं हाई टेम्परेचर तो वो मेल्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज destroyed and it becomes permeable to everything. हमें इसमें आयरन ऐड करना है. Mic is not allowed, please. You can continue. Miss Misbah? Yes, please. उम्मे हबीबा, please. जब ये बॉयल जो हम बॉइलिंग वाटर में डाल रहे हैं तो can't you put it like directly? Miss, can't you put the leaf directly into the water? Yes, we can put leaf directly into the water. We can put leaf directly into the water. Okay. Okay, we will boil it into the water. This will make the cell membrane permeable, right? And the second, again, we will boil it into, after 10 minutes, we will boil it into the ethanol. Purpose of boiling it into the ethanol is that it will dissolve its chlorophyll, as ethanol is organic and chlorophyll is also organic. So after 10 minutes, the color of the ethanol will also change from white to green, because it will absorb the chlorophyll and chlorophyll is of green color. ठीक. अच्छा, then we will take this leaf and again boil it into the water. Why we are boiling it into the water again? The reason is that it makes the leaf more permeable to iodine, or to make the leaf more permeable to iodine हम इसको again boil करते हैं into water. It's very simple. आप देखें स्टार टेस्ट में पहले हमने इसको boil किया into water for 10 minutes. Then we have boiled it into the ethanol, right? Again we have boiled it into the water, and in the end we will add iodine onto the leaf. Precautionary measures मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. अच्छा, we will use water bath for boiling it into the ethanol and we will put off the flame. Reason is as it is the combustible. तो हमने ये दो precautionary measures लेने हैं और safety measures लेने हैं. और safety measures हम wire gauze भी use करते हैं for homogeneous mixing. Okay, और इसमें you can also wear goggles while you are dealing with the flame. These are the safety measures. Whenever in paper 6, while designing an experiment, safety measure is written, तो आपने वो लाजमी mention करना होता है safety measure, right? अच्छा, in the end we will add iodine. If the color of the iodine changes from brown to blue black, you are joining late and this is important for you, so I'm going to discuss here. These were some of the chemicals जो हम यूज करते हैं और इनका पर्पस क्या है. ठीक है, यहाँ पर हम आयोडीन यूज करते हैं. दिस इज फॉर टेस्टिंग स्टार्च एंड आयोडीन इज ऑफ ब्राउन कलर. इफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक मींस दैट इट कंटेन्स स्टार्च, राइट? और बाकी भी हमने जो कुछ दिए हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन राइट डाउन व्हाट
for what purpose these chemicals are used in this experiment. राइट, अच्छा अब आप देखिए कि हमारे पास प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स which leaf will turn blue black. The one from experimental group will turn blue black, or the one from control group will turn blue black. Yes, which one will turn blue black? The one in experimental group will stay brown because no photosynthesis has taken place. Yes. Yes, Simab, from its control setup, leaf will turn blue black because it has carried out photosynthesis and it has synthesized glucose and it has synthesized starch. So that starch will react with the iodine and it will turn blue black. Okay, in an experimental group, it will stay brown. So this comparison will let us know that carbon dioxide is very important for photosynthesis. If carbon dioxide is missing, then no photosynthesis takes place. सेम में हम जल्दी से नेक्स्ट भी कर लेते हैं as we have to wind up this chapter today. Another important factor for photosynthesis is chlorophyll. There are some of the plants which are growing in soil which is deficient in magnesium, तो उनमें chlorophyll की deficiency हो जाती है. And there is deficiency of the chlorophyll into the plants. They have variegated leaves. As you can see here, variegated leaves have whitish एरियाज ओवर देयर. ठीक है, या हम स्पॉट्स भी कह सकते हैं, स्पॉट्स भी हो सकते हैं, व्हाइटिश एरिया भी हो सकता है, विच हैज सम पार्ट ग्रीन एंड सम पार्ट हैज ब्राउनिश और येलोइश पार्ट. येलोइश होता है मोस्टली बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द क्लोरोफिल. राइट. अच्छा, those plants which are growing in the soil which is deficient in magnesium, we will pluck off their variegated leaf. Variegated leaf will have yellow area deficient in chlorophyll and green area which will contain chlorophyll. Okay, Duranta is one of the example. उसका हम लीफ प्लक करेंगे. अगेन हम क्या करेंगे, लीफ का स्टार्च टेस्ट करेंगे एज इट इज. अच्छा, इससे पहले हमें हमेशा प्लांट को डी स्टार्च करना है ताकि उसमें जो यूज्ड स्टार्च है दैट शुड बी यूज्ड बाय द प्लांट. स्टोर्ड स्टार्च शुड बी यूज्ड बाय द प्लांट और बाद में हमें इसको सनलाइट में प्लेस करना है सो दैट इट शुड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. अगेन हम इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ठीक है, और स्टार्च टेस्ट में यस बेटा टेल मी द रिजल्ट्स, व्हाट विल बी द रिजल्ट्स. इसी लीफ के ऊपर what will be the color of iodine on yellow area and what will be the color of iodine on green area. Yellow area does not have chloroplast and green area contains chloroplast. So the results are also written in this. Green area iodine will turn blue black because of the starch presence and in this yellow area it will turn brown. Okay, ये results हैं. Next जो है which gas is given off during photosynthesis.